Very good morning, children. In the last lecture, we studied how to represent complex number in an argand plane. Then we also studied how to find modulus. Modulus was square root of x square plus y square if z equal to x plus iy is the complex number. And argument, amplitude or theta is given by tan inverse y by x. Correct? Today we'll learn how to represent this complex number z equal to x plus iy in trigonometric form, or you can say polar form and exponential form. That is how I can convert this xy into trigonometry and into the power of e raised to something. Okay. So we have to learn how to convert the complex number z equal to x plus iy in the polar form and in the exponential form. Okay, let us deal with that. So now see, we know how to represent this in argand plane, correct? If this is my z, then this will be 90, ये theta होगा. Let us say this is P O A. So what can I say about OA? I can say OA is x, AP is y, and OP is mod z. Correct? What can I say about OP? We know that OP is mod z. Correct? Understood? Now see, if I talk about triangle OAP, in triangle OAP, I can write sine theta. How I can write sine theta? Sine theta as y by mod z, correct? And cos theta as x by mod z, correct? Sine theta as y by mod z, cos theta as x by mod z. That is, I will get the value of y as mod z sine theta, and I'll get the value of x as mod z cos theta. क्या मिलेगा x mod z cos theta और y क्या मिलेगा mod z sin theta. Now what will I do? I'll replace x plus iy with the found values. तो x कितना है बच्चों? mod z cos theta. I, what is y? Y is mod z sin theta, correct? Now I will take mod z common. तो अंदर क्या बचेगा? Cos theta plus I sin theta. Now to make it sound good, I will say that let mod z nothing but r. Let us say mod z is nothing but r. Mod z is nothing but r. So my polar form becomes z is equal to r cos theta plus I sin theta. क्या हो जाएगा z? Z is equal to r times cos theta plus I sin theta. You know how to find theta, children. Theta is tan inverse y by x. You know how to find r, that is square root of x square plus y square. तो सिर्फ क्या करना है? मॉडुलस फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. After finding r and theta, substitute those values in z, you will get the polar form. What you will get? You will get the polar form of the complex number. ठीक है? Now let us deal with exponential form. Okay? Next part is exponential form. So again I know what is r, I know what is theta. So in exponential form, z can be written as r times e raised to I theta. I can write z as r times e raised to I theta. Are you getting it? Yes? I hope there is no doubt. Clear nicely? Z is equal to r e raised to I theta in exponential form, and in polar form z equal to r times cos theta plus I sin theta. Okay, so remember these two formulas. We'll try to solve sums where we'll convert Cartesian form, that is x plus iy, into polar form and exponential form. Okay. So first one, express the following in polar and exponential. So whenever you see the word polar and exponential, first be ready with r, that is nothing but mod z. Now you are very familiar how to find mod z. So we'll write directly minus 1 square plus root 3 का square, correct?
that is 1 plus 3 4, square root of 4 is 2. So I'm getting r, that is modulus of z, as 2, correct? Up theta, now tell me which quadrant this is lying. It is lying in second quadrant. Why? Because x is negative and y is positive. x negative है, y positive है, तो concept remains same. तो यहाँ आएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ रूट 3 अपॉन माइनस 1 बराबर. सो थीटा आएगा पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3. नाउ tan रूट 3 किसके लिए आता है? tan is root 3 for 60 degree. tan is root 3 for 60 degree. So pi minus pi by 3. So theta comes out to be 2 pi by 3. How much I'll get theta? Theta will be 2 pi by 3. Now I know theta, I know r. तो पोलर फॉर्म क्या आएगा बच्चों? z is equal to r cos theta plus I sin theta. Correct? This is my polar form. This will be my polar form. Just substitute the values and keep as it is. No need to further simplify. Then we have exponential form. क्या होता है exponential? Z is equal to r e raised to I theta. Theta कितना है? 2 pi by 3. This will be my exponential form. इसको और simplify करने की जरूरत नहीं है. Understood? Now my next number is z is equal to minus I. So I'll write in the standard format as 0 plus minus 1 times I. क्या लिखेंगे? 0 plus minus 1 times I. Again I'll find modulus. तो r आएगा 0 square plus minus 1 का square, that is 1. My theta, it will be on negative y axis, correct? Negative y axis का मतलब है the angle will be 3 pi by 2. क्या आएगा angle? 3 pi by 2 because it is lying on negative y axis. So this angle is nothing but 3 pi by 2. So z becomes r cos theta plus I sin theta, correct? This is my polar form. और एक्सपोनेंशियल क्या आएगा? r e raised to I theta. r e raised to I theta, that is exponential form. r e raised to I theta. Understood? Yes. Any doubts in converting complex number to polar form and exponential form? Very simple. Be ready with r, that is modulus, and be ready with theta. Once you get r and theta, directly substitute r and theta in the polar form and in the exponential form. You will get the answer. Understood? Next, again this also you have to convert in polar form. So पहले मैं rationalize करूंगा, तो क्या आएगा? 1 plus 3i, 1 plus 3i. Multiply करेंगे, so 1 plus 3i plus 2i plus 6i square. Now write denominator directly. Denominator आएगा मेरा 10, correct? ये हुआ minus 6 plus 1 minus 5 plus 5i upon 10. I can take 5 common from numerator. So minus 1 plus I upon 10. In short, मेरा complex number आया minus half plus half times I. Correct? I got my simplified complex number minus half plus half times I. Now, as usual, हम पहले mod z, that is r find करेंगे, जो कितना आएगा? minus half square plus half square, correct? That is 1 by 4 plus 1 by 4, 2 by 4, that is root half. What will be theta? X negative है, y positive है. It will lie in second quadrant. So pi minus tan inverse, modulus लिया, तो half upon half, that is 1. Tan 1 किसके लिए आता है बच्चों? It comes for 45 degree. Therefore, theta is coming out to be 3 pi by 4. कितना आ रहा है theta? 3 pi by 4. So polar form आएगा r, that is root half cos theta plus I sin theta. ठीक है? Exponential form r
e raised to I theta, r e raised to I theta. Understood? Yes. Now उल्टा, express the following in x plus iy form. मतलब पोलर फॉर्म दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, you have to convert into कार्टेशियन फॉर्म. It's very easy. सिर्फ सिंप्लीफाई करो गिवन एक्सप्रेशन को. Keep root 3 as it is. cos 30 कितना होता है? root 3 by 2. sin 30 कितना होता है? हाफ. sin 30 कितना होता है? हाफ. Multiply root 3 inside. So 3 by 2 प्लस रूट 3 बाई 2i हो गया मेरा x प्लस आई वाई के फॉर्म में. कन्वर्टिंग फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन इज वेरी इजी. सिर्फ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो, डायरेक्टली गेट द आंसर ऑफ पोलर इनटू कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ सी रूट 2 एज इट इज आएगा. Now you know how to solve cos 7 pi by 4. Cos pi by 4 तो 1 by root 2 आता है. This will lie in which quadrant? Fourth quadrant. फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है. ठीक है. In trigonometry you have learned how to find sin 7 pi by 4. It is lying in fourth quadrant, so it is negative and pi by 4 है, इसलिए 1 by root 2. root 2 मल्टीप्लाई करो, आपका कार्टेशियन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 1 माइनस आई. कार्टेशियन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 1 माइनस आई. इजी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल से कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन प्लेन में जाना है. सो फर्स्ट वन इज e रेज टू आई पाई बाय 3. और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? r e रेज टू आई थीटा. करेक्ट. तो यहाँ पर r इज नॉट गिवन, इट मीन्स माई r इज 1. In short, r given as 1. थीटा कंपेयर किया तो थीटा इज गिवन एज पाई बाय 3. r 1 है, थीटा पाई बाय 3 है. करेक्ट. सो फर्स्ट आई कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म क्या होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना. r cos थीटा प्लस i sin थीटा. सो 1 cos 60 हाफ sin 60 रूट 3 बाई 2. तो ये हो गया मेरा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. हाफ प्लस रूट 3 बाई 2 आई. अंडरस्टूड. अगेन सेकेंड, इट इज सिंपली गिवन एज e रेज टू आई माइनस 4 पाई बाई 3. सो आई जस्ट राइट 1 ओवर हियर. अगेन r कितना दिया है? 1. थीटा कितना दिया है? माइनस 4 पाई बाई 3. r और थीटा मालूम है. So I'll write z as r cos theta plus I sin theta. अभी सबको पता है cos of minus theta क्या होता है? cos theta. तो ये आएगा cos 4 pi by 3. sin of minus theta is minus sin theta, है ना. Now substitute the value of cos 4 pi by 3, sin 4 pi by 3 and write your answer. Understood? Substitute the value of cos 4 pi by 3, sin 4 pi by 3, you will get the answer in the Cartesian plane. Understood? Next, find the modulus and argument of 1 plus 2i upon 1 plus 3i. अभी solve किया है previous sum, so I'll go little bit fast over here. ऐसे आएगा. First I'll multiply by the conjugate. So I'll get 1 plus 5i minus 6 upon 10. Same sum we have solved, so I'm going a bit fast. So it will be minus 5 plus 5i upon 10, that is minus half plus half i. तो mod z कितना आएगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर. राइट द आंसर एंड देन फाइंड थीटा. इट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, that is 3 pi by 4 and this will be 1 by root 2. Okay, understood? Clear everyone? Okay, last, convert z in polar form. किस फॉर्म में लाना है इसको बच्चों? पोलर फॉर्म में लाना है. तो पहले मैं क्या करूंगा? I'll simplify this. तो ये है i minus 1
What is cos pi by 3? Half. What is sin pi by 3? रूट 3 बाई 2. कितना है? रूट 3 बाई 2. 2 कॉमन है, 2 ऊपर लेके जाएंगे, सो 2i माइनस 1, 1 प्लस रूट 3i, 2i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3i. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल, बिकॉज वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में. तो कितना आएगा? 2i माइनस 2 रूट 3i स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3i. डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया तो आंसर आएगा 4. ये हो गया माइनस 1, करेक्ट. ये कितना हो गया? माइनस 1. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 टाइम्स i. Let me check. There should not be any mistake. I minus 1. Cos 60 is half. Sin 60 is root 3 by 2. Correct. So 2 goes up. Oh, sorry. There should be 2i minus 2. Sorry for the mistake. So 2i, ये हो जाएगा 2, है ना, और ये हो जाएगा 2 root 3i. Am I right? So 2i 2 root 3, correct, minus 2 प्लस 2 रूट 3i. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 एंड 2 प्लस 2 रूट 3. दैट इज, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रियल पार्ट, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इमेजिनरी पार्ट. करेक्ट. नाउ आई कन्वर्ट दिस इन पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म के लिए क्या लगेगा? r. तो बच्चों r कितना आएगा? माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 the whole square plus 1 plus root 3 upon 2 the whole square. Correct? तो ये कितना आएगा? This will become, I'll find r and theta for you. You convert into polar form. तो ये आएगा 1 plus 2, sorry, 1 plus, just a second, a plus b the whole square. So 1 plus 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 4. करेक्ट. सो माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसल, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 4 2. तो r कितना आ रहा है बच्चों? रूट 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r कमिंग आउट टू बी? रूट 2. नाउ थीटा कितना आएगा? कीप थीटा एज इट इज, tan इनवर्स. ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 minus 1. I don't know what is the value of this, so I'll keep theta as it is. Tan inverse 1 plus root 3 upon root 3 minus 1. तो पोलर फॉर्म आ जाएगा r cos theta plus I sin theta, where theta is this. No need to write the big theta over there. You can simply write this: z is equal to r cos theta plus I sin theta. I hope I have not done any silly mistake over here. Okay. Thank you everyone.